Alright, so adherence को improve करने के लिए right syllabus के अंदर तीन perspective हैं as in डॉक्टर्स को अपने बारे में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, या व्हाट यू क्या कहते हैं हाउ यू मोटिवेट पीपल टू टेक द ट्रीटमेंट के बारे में चेंज करना पड़ेगा, राइट? मोटिवेशन टेक्निक, द ट्रीटमेंट itself and the doctors. तो डॉक्टर का वैसे वी हैज एन आइडिया क्योंकि अराउंड द टाइम 1988 you know what बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड थे स्पेशली इन यूके with doctor's appointment. So to counter this leak कहता है कि you know what, follow the three guidelines that I'm going to give to you. So in an appointment, the doctor is supposed to do these three things. And these three things are not in order, but किसी भी order में करना होता है. But it's important कि ये तीनों चीजें satisfy हो जाएं, ये fulfill हो जाएं. So Lee said that the doctor should address 3 points: satisfaction, selection, content, and understanding and memory in an appointment. And the way you do these three things are, for example, in an appointment, डॉक्टर को सेटिस्फैक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लोगों को सुनना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, so that he gets adequate information out of them and the patients feel कि भाई डॉक्टर ने actually हमें सुना है. So that's how you satisfy people. Regarding the criteria for understanding memory, the doctor will fulfill इस तरीके से कि in an appointment वो medical terminology मुश्किल इस्तेमाल नहीं करेगा. Also, सब कुछ समझाने के बाद the doctor would ask the patients about their input, feedback वगैरह, ठीक है ना, and also would ask them to repeat whatever he just says to make sure that the patients understand. And repetition से एक और चीज़ ये हो जाती है कि उनके memory के अंदर आसानी से बैठ जाता है. And also because medical jargons नहीं है तो आपको याद रखने में डॉक्टर के instructions and things आसान हो जाता है, ठीक है. So use easy language, encourage feedback, and make them repeat what you just said. Selection content का criteria fulfill करने के लिए the doctor what they have to do is adequately know के सामने बंदा कौन है, उसके हवाले से मुझे क्या बोलना है. So knowing what to say in front of the right people, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने कुछ गलत चीज बोल तो it might backfire. हो सकता है कि आपने कोई गलत चीज बोल दी and they might take offense or they might get scared or they might not come back to you again. So you have to make sure whatever you say to them is what is supposed to be said to them, ठीक है. तो you have to select your content in your mind, filter out content in your mind, ठीक है ना. उनको सब कुछ नहीं बता सकते, उनको स्पेसिफिक चीजें बता सकते हैं. So ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, जस्ट दी ने बोला कि यार ये तीन चीजें फॉलो कर लो, ठीक है. So it's holistic क्योंकि there are multiple aspects being covered. uh, and I would feel के I would feel के जो ली का जो experiment, right, sorry, ली का जो theory है, right, I would feel that it is applicable as well because obviously satisfaction, understanding memory, and selective content applicable concepts, right? The weakness would be that uh, क्या कहते हैं, it is difficult to know whether these guidelines have worked because if they work, so we don't know which one of them work. All three of them could be working or one of them or two of them working. क्योंकि satisfaction बंदा satisfy हो गया, right, at the end of the appointment, but you don't know कि कौन सा criteria fulfill हुआ. So even if it works, we don't know exactly what works. So yeah, that's one thing as well. ठीक है ना. And also if it did not work, so we don't know what did not work, ठीक है ना. So सक्सेस के चांसेस के अंदर भी एंड फेलियर के चांसेस के अंदर भी हमें नहीं पता कि इन तीनों में से सबने काम किया या कुछ चीजें काम कर रही हैं. वी जस्ट नो इट वर्क्स बट वी डोंट नो व्हाट वर्क्स, ठीक है. एट टाइम्स ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि दीज थिंग्स रिक्वायर टाइम एंड रश के तौर पे, इमरजेंसी के तौर पे, you don't have time to give people. So these might be useful in very specific scenarios but not always जहाँ पे डॉक्टर के पास टाइम ना हो. Apart from that, the strength apart from क्या कहते हैं holistic and applicable के हवाले से, uh, apart from I don't feel any as such कुछ है. I would feel कि could be culture bias now क्योंकि you know what, you can practice these points in any single culture and उसकी जो effectivity है, और सब हर कल्चर के अंदर ये करोगे तो आउटकम एक ही आना चाहिए
कि people, appointments से satisfy होंगे. I would think it's not culture bias because these things are present in every single culture, especially ये सब, ठीक है. So I would feel it's not culture bias. But in the sense it could be culture bias, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि Western culture के अंदर you're addressing the patient directly, नहीं हमारे collectivist culture के अंदर patient में family आती है, तो family के साथ ये सारी चीजें क्राइटेरिया फुलफिल करना और एक इंडिविजुअल के साथ सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना इज जमीन आसमान का फर्क. सो कलेक्टिविस्ट कल्चर का थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सेलेक्टिव कंटेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फैमिली मेंबर को कुछ और बताना होगा, इंडिविजुअल पेशेंट को कुछ और बताना होगा, बट यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते, राइट? एंड आल्सो इन द इंफॉर्मेशन दैट यू टेल द पेशेंट फैमिली मेंबर्स may not be kept confidential क्योंकि सब गुस्से में, so it might make the interaction थोड़ा बहुत difficult. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट it's like ये जो side research है by our teacher, right? Our teacher gave a model simple, ठीक है, it's not part of your syllabus, but it's a side research, ठीक है ना, and this is coming under Lee's का content of the Lee के जो syllabus का हिस्सा उसके अंदर आता है ये. So our teacher kind of like has the same philosophy as Lee, doctors have to change the way they speak to the patient. So Lee, building upon Lee's theory, our teacher ने अपना simple model दिया हुआ, right? And simple का जो acronym है ये है, simplify the treatment, ठीक है, give knowledge, change the patient's belief, talk to their family, don't let any bias come in your meeting and evaluate the adherence, ठीक है. So I would say it's like a bit of broad spectrum as compared to Lee, but our teacher had the same idea, right? So because our teacher had the same idea and Lee had the same idea, and because some of them are which points are just similar, right? For example, imparting knowledge, right? जहाँ पे आपने listening वाला concept आना है, selective content वाला आना है, right? And understanding memory वाला आना है, like don't use medical jargon वाला scene, ठीक है. And obviously simplify regimen characteristics is also coming under understand memory क्योंकि जितना simple रखोगे उतना बंदे को याद रहेगा, ठीक है. तो कुछ points similar हैं, तो our teachers like in some aspects supporting what Lee said in his own theory एक तरीके से. But you don't have to remember that's just a side research, ठीक है. So next we are going to talk about how to change the way we motivate people to adhere. So Yokel and Gramwick research, they're gonna try out 6 techniques. 4 of them are gonna be baqaida experimental and 2 of them are gonna be controlled, but there's 6 groups and 4 interventions, and they're gonna find out चारों में से कौन सा टेक्निक सबसे जबरदस्त है. फिर कंट्रोल कंडीशन हम नहीं गिनते टेक्निक्स के अंदर, लेकिन कंट्रोल कंडीशन को हम कंडीशंस के अंदर गिनेंगे. 4 कंडीशन है, 4 टेक्निक्स है, 6 कंडीशन है, ठीक है. So to find out which works, 1100 plus people are randomly assigned to one of the 6 conditions. They can be in the control group, they can be in the experimental group. It's completely up to random. तो होता क्या है कि इनको एक वैक्सीन लगानी पड़ती है, राइट? So think of it this way कि ये लोग हैं कोरोना का वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे, and Jacqueline Grelmick are going to try six techniques to make them come to take the vaccine. So group number 1 के जो अंदर जो लोग allocate होते हैं, right, उनके साथ इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि उनको मेल किया जाता है about the vaccination information, right? वो सब general होता है, but there's no specific information regarding the vaccine. It's just a general post about the vaccine, and they're gonna see if it works or not. Group number 2 के अंदर they do the same thing, mail करते हैं vaccine के बारे में to the people, but इसके अंदर जो content थोड़ा different होता है. Rather than saying कि बच्चे को just vaccine लगेगा, इसके अंदर बताते हैं कि कौन सा vaccine लगेगा, ऐसे कोरोना का लगेगा या चिकन पॉक्स का लगेगा, specifying the vaccine. तो ये थोड़ा सा लगा क्योंकि यहाँ पे exactly बताते हैं कि आपके बच्चे को ये वाला vaccine लगेगा. Also additional information होता है कि अगर आपके पास्ट में अगर आपने बच्चे को कोई वैक्सीन लगवाया था बट अगर नहीं लगा
हॉस्पिटल में, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। तो इस सो देर स्पेसिफाइंग द वैक्सीन दैट इज टू बी गिवन, बट देर ऑल्सो सेइंग कि अगर इसके अलावा भी और कोई वैक्सीन होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। ग्रुप नंबर 3 के अंदर क्या होगा? ग्रुप नंबर 3 के अंदर द सेम थिंग विल अप्लाई जो ग्रुप नंबर 2 के साथ था, बट इसके साथ एडिशनल मोटिवेशन डालते हैं। So like, specifying the vaccine free of cost के अलावा they also add some specific information के they also write the day in which the clinic will be active, and they also write the timing in which the clinic will be active, and उसके अलावा they also write कि भाई आप हमारा अपना बच्चा हमारे पास छोड़ के जा सकते हो ताकि आप अपना नाइट आउट एंजॉय करो, और हम आपका बच्चा जो है फ्री में देखेंगे। तो यहाँ पे एक और अलग तरीके से इंसेंटिव तक बच्चा छोड़ दो वो फ्री में देखेंगे, एंड टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया स्लॉट के साथ। ग्रुप नंबर 4 के साथ बी स्पेसिफिक वैक्सीन की इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड की थी कि जो लोग आएंगे उनको लॉटरी के लकी ड्रॉ के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा $175 ले सकते हैं, एंड टू टेक पार्ट इन द लॉटरी दे जस्ट हैव टू ब्रिंग देयर चाइल्ड फॉर वैक्सीन। ठीक है, बाकी जो कंट्रोल कंडीशंस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल के अंदर क्या था कि उनको लेटर नहीं दिया गया, बस फोन कॉल के अंदर जनरल प्रॉम्प्ट दिया गया था। एंड 6 के अंदर कुछ 6 वालों को कुछ भी नहीं बताया था, अगर आ गए तो आगे, नहीं आया तो नहीं है। एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि व्हिच टेक्निक वर्क्स बेस्ट। सो Jocelyn Grenwick found के what technique number 2 3 4 are best। ठीक है, 2 3 4, ये वाला 2 3 4 are best, और इन तीनों में से जो सबसे अच्छा है ना वो 4 है, मॉनिटरी इंसेंटिव लॉटरी वाला। ठीक है, 5 and 6 का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, एंड विद रिगार्डिंग टू अ टेक्निक 2 3 4 का जबरदस्त रिस्पॉन्स है, 4 बीइंग द सबसे जबरदस्त, एंड 1 का सबसे बेकार है। ठीक है, तो जॉकलिन ग्रेनविक फाउंड कि हाउ टू मोटिवेट पीपल, तो लार्जली आइंदा अगर किसी को वैक्सीन लगाना तो पैसों का लालच दो, along with giving some specific information। ठीक है, so that क्या कहते हैं people find it useful, but ज्यादातर monitoring incentive होगा तो people will come, specific information होगा तो people will still come, but less than the monitoring incentive। But if you just give the general information, people are less likely to come। So that's Jockling experiment। It is applicable क्योंकि what, हमारे शहर के अंदर वैक्सीन किस तरह लगाना है, कौन सा लगाना है, स्पेसिफाई द प्रोसेस, और अच्छा होगा अगर पैसे का इंसेंटिव रखोगे और अच्छा होगा, राइट। इट्स एप्लीकेबल। इट्स होलिस्टिक इन द सेंस कि बहुत सारे इंटरवेंशंस में चेक किए थे, नॉट जस्ट द मॉनिटरी एस्पेक्ट। सो इट इज दैट। इज इट इंडिविजुअल सिचुएशन? आई वुड से सिचुएशनल, क्योंकि आपने इंसेंटिव्स के सिचुएशन सबके लिए अलग रखे थे। इट हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल फैक्टर, पर हो सकता है कि इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर हेल्थ बिलीफ मॉडल का ये आ जाएगा कि हर बंदे को वैक्सीनेशन के बारे में बिलीफ अलग था, बट देयर इज नो वे वी कैन फाइंड दैट आउट इन दिस एक्सपेरिमेंट। वी ओनली नो कि सिचुएशनल फैक्टर यहाँ पे एट प्ले है। Apart from that, I would say that it is externally valid experiment क्योंकि field experiment था, right? They use real participant uh, with real vaccination, with real children who need vaccination. It is externally valid in that regard। Generalizability बहुत high होगी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। So yeah, ठीक है। तो तुम लोगों को कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 के अंदर कितने लोग थे, क्या कंडीशन था। दैट्स द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, बाकी सब आसान है। And yeah, they did use independent maze design, right? 6 ग्रुप थे, 4 वो एंड 4 वो टेक्निक, एंड वो 2 वो कंट्रोल। सो इसके अराउंड क्वेश्चंस ऐसा आते हैं कि design experiment to whether sending reminders would be leading to improving the adherence of people or not, right? So you're going to make 2 groups, यहाँ पे एक के अंदर reminders रखोगे, दूसरे के अंदर reminder नहीं रखोगे, and you want to see on the day of appointment के कितने लोग आते हैं। That's the rough idea। Sometimes graph वाले question देते हैं, right? You don't even need to remember the graph। ये 6 ग्रुप्स हैं, and 6 ग्रुप्स के रिजल्ट दिखाए हुए ग्राफ के अंदर, and you just
चल के सबसे ज्यादा लाइन किसकी ऊंची है, सबसे बेकार ग्रुप कौन सा है, सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है, तो वही है, सबसे ऊपर जो लाइन होगी वो उसी की होगी, मॉनेटरी इंसेंटिव वाले। सबसे बेकार लाइन जो होगी ना, कंट्रोल ग्रुप वाले की होगी। ओ सॉरी, यहाँ पे, हाँ, सबसे बेकार लाइन, हाँ सॉरी, कंट्रोल ग्रुप वाले की होगी। देन जनरल ग्रुप की होगी, देन स्पेसिफिक की होगी, देन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इंक्रीज एक्सेस की होगी, फिर सबसे ज्यादा अच्छी जो है मॉनिटरी इंसेंटिव पे। इसका भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं, जस्ट नीड टू रीड द ग्राफ कि किसकी लाइन सबसे ऊपर है, किसकी वैल्यू लाइन सबसे नीचे है। सो देयर इज नथिंग फॉर यू रिमेंबर, यहाँ पे यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड हैव गुड ग्राफ रीडिंग स्किल्स कभी कभार। या यू नीड टू रिमेंबर कि कौन से ग्रुप के अंदर क्या रिजल्ट है, सबसे अच्छा किसका है, सबसे बेकार किसका है। तो यू नो व्हाट, लेस देन मोर देन करोगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेरेंस के परसेंटेजेस कहीं नहीं दिए हुए। सो मोर देन, लेस देन। ठीक है, ये पूल्ड कंट्रोल ग्रुप्स का मतलब है कि दोनों लो कंट्रोल ग्रुप है ना, तो वी वोंट से कि दोनों कंट्रोल ग्रुप बेकार था, हम दोनों कंट्रोल ग्रुप को एक साथ मिला देता है एट द एंड। सो 4 5 and 6 आर कंबाइंड एंड दे आर नोन एज पूल कंट्रोल ग्रुप। एंड यस, सबसे बेकार कंट्रोल ग्रुप का रिस्पॉन्स आया था। And yeah, last technique we are going to find out, we're going to talk about is कि you know what, let's change the treatment itself. तो यहाँ पे वॉट की एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक इनहेलर होता है ना, कि जो पंप पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिनको एजमा होता है, वॉट ने इनहेलर को बोरिंग शक्ल से, यू नो लाइक, he made a toy version of the inhaler जो पिक की शक्ल में है. So it appeals to the kid, looks more cute and looks more kid friendly, and we want to find this के क्या inhaler की शक्ल change करने से will it work or not. So he did this experiment with 32 kids जिनको एजमा का मसला था, right? And their data was collected through a questionnaire. ठीक है, तो they're gonna find out the usage of a regular inhaler compared with the fun inhaler. तो when compared to the regular inhaler, the fun inhaler के अंदर क्या हुआ, when fun inhaler was introduced, 38% more parents, right, use the fun inhaler on the kids. तो अगर नॉर्मल इनहेलर होता है तो उससे 38% ज्यादा फन इनहेलर को लोग इस्तेमाल करते थे अपने बच्चों के ऊपर, राइट? So that's the parents' input. ठीक है, parents are more likely to respond to fun hitter. But what about the kids? Do they respond more to the fun hitter? Yes, क्योंकि जब fun hitter introduce होता है, the kids are 60% more likely to use the fun hitter on time. लेकिन अगर boring inhaler होता तो बच्चे कभी कभार अपना डोज मिस कर देते थे। ठीक है, तो बस फन हिटर आता तो अपने बच्चे अपना डोज जो है 60% ऑन टाइम सही से लेते थे। सो इट जस्ट गोज टू शो दैट यू नो व्हाट, सिंपल आइडियाज लाइक दिस डू improve adherence at least in children, but generalizable नहीं होगा, क्योंकि एज रेंज किड्स के अलावा किसी और के ऊपर जनरलाइजेबल नहीं होगा। तो अडल्ट के ऊपर जनरलाइजेबल नहीं होगा, लेकिन बच्चों के ऊपर जनरलाइजेबल होगा, स्पेशली फॉर्म 1 से लेके 6 साल के बच्चों तक। It is applicable, it's not cost, it is applicable क्योंकि you know you can do this with any treatment for kids and it's gonna work, but it's not cost effective क्योंकि the fancy inhalers and are gonna be expensive। ठीक है, um, this is a situational factor क्योंकि inhaler की शक्ल change करने से लोग का response change हो गया, nothing to do with the individual aspect। um, इसके अलावा it is उसके अलावा what you can say is that it is reductionist क्योंकि it is focusing on the behavioral aspect, right? It is not focusing on the health belief model. It's not focusing on people's cognition, just focusing on how the inhaler looks, right? So it is a very reductionist perspective in that regard. So यही है ज्यादातर 3 चीजें, and that's how you improve adherence.